हेलो अंकिता, बाकी सब क्यों ज्वाइन नहीं किया? नो सर, सर ज्वाइन कर रहे हैं। ओके good afternoon to everyone. And my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, last class I discussed about the program of ones complement, twos complement, and multiplication and square of a 8-bit number. And today I discuss about the summation of n bits number or n series of number. Summation of n bit number or sum of n number. Summation of series of 8-bit number. So firstly I see the input. That is the our input. Input data, this part is the input data. The input data is 02, 04, 03, 02, 01. There are a number of data is 5 क्योंकि n number n यहाँ पर we can assume that in this program the our n is a number is 5. So this is the n hour. So we can add using this program n number of data. Okay, so data are
02, 04, 03, 02, and 01. So first, starting from flowchart, so program name, write an assembly language program to find the summation of series of 8-bit numbers. So first the start block, then load HL register pair with address of counter memory location, then move the counter को कोई भी एक रजिस्टर में लेना है तो इन जनरल वी आर यूज्ड फॉर सी रजिस्टर एज ए काउंटर of 8085 microprocessor. So first we load the HL register pair with the address of counter's memory location, then move the counter from memory to register C after initializing the accumulator with 00. मतलब accumulator को हमको 00 करना है. So we initialize the accumulator with 00. Then increment the HL register pair. Then increment the HL register pair to point the next memory location. Next memory location means that initially the LXI load this memory at location where is the our counter value is loaded. So we initialize the counter value to C register, then initialize the accumulator, then increase the INX register, मतलब in register pair or HL register pair to point out the next memory location. So here is the next memory location is this. So this memory location data is this. So you can go back to this portion. So initialize the accumulator with the 00, then increment HL pair to point next memory location and move the next number from memory to B register. Then we add B with A. So what is the value of A? A's value is 00 because we previously we initialized the accumulator as a 00, and the value of B is the first. Now in number of series data is the first data, which is here in this case is 02. Then decrement the counter registered. So in the decrement the counter registered, now the counter register value is 04. If the counter is 0, then अगर counter 0 होगा तो we go to the forward path. अगर counter 0 नहीं होगा, then go back to again this step. Again increment the HL register pair to point the next memory location. Again move the next number from memory register to register B and add B with A and again decrement the counter. So previously initial stage the counter value is 05. After decrementing the counter value is previously is 04. Then again decrement, so 03. If here is the counter is 0, no, यहाँ पर भी counter value 0 नहीं हो क्योंकि अभी 03 है. Then no means again back to state until the counter means C register value is 0. Then C register value is 0. Then increment the HL register pair and move the result from accumulator to memory. Then our program is completed. So we use stop. Okay. Now see the program. So first our starting address is 2000 hex. Our starting address is 2000 hex. So here LXIH 3000 hex means that load HL pair with address of 3000 hex. So in our HL register pair loaded with a 3000 hex address, and in this address our desired counter value is loaded. So desired counter value means in this example the counter value is 05. So this is the counter 05. Then what happened? We move the value of counter from memory to
memory to register C. Move the counter from memory to register C by using move C comma M instruction. By using move C comma M instruction. And next, MBI A00H. MBI A00H initialize the 00 to accumulator, or initialize the accumulator with 0 0, and again increment the HL register pair to point the next memory location. Now previously our memory location is this, means 3000. Now after the using of INX is the next memory location will be point, the next memory location is that 03001 3001. Now again we using move instruction, move B comma M means that memory content, or move the next number from memory to register B, move the next number to memory to register B. And again after that we add B, means B value with added the value of A, or accumulator content will be added with the B content. So previously the accumulator value is 00. Okay, accumulator value is 00, and B value is the first data of the N series number. The first data is 0. First data is 02. So we add the this, and then the DCRC decrement the register counter C register. So previously, or the starting point, the C value is the 0 5. After the decrement, now the C value is 0 4. So here J and Z jump if the counter is not 0, or jump the address 2006 means that address. So if the counter is not 0, so in this case there will be counter is not 0, because the counter value now is the value is 0 4. So we back to this step, means this location. So again INX H, again move this, again add B, again decrement the register. So now the C value is 03. Again check whether the counter is 0 or not. If not, then jump to this location J and Z, to this location until the value of is C is 0. Jab C values is get to 0, then we can go to the forward path. So next instruction is INX H, means increment HL register pair. Now move M comma A means that move the result from register A to memory. And now last instruction is halt or stop the execution, or okay, you already our program is completed. So here data is the 02, 04, 03, 02 and 01, and total number of data is 5. And the after the execution, the value of this program is 0C, or addition of n series number, or n number, n series of n number is 0C, where the n is the value is 5. N is the value is 5. तो इस प्रोग्राम में किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? हेलो, is there any query or any kind of question regarding this program? सर बोलो सर, यहाँ पे एड्रेस 2005 में अब इमीडिएट वैल्यू 00H क्यों है? 2005 में इमीडिएट वैल्यू 00H, उसका ये मतलब बोल रहे हो ना? यस सर। इसमें ये जो MBI ये क्या है मेरा,
इंस्ट्रक्शन है Move. लोड और मूव ए with 00. So this is how many byte of instruction? 2 byte instruction. First is opcode, then here operand, then operand. So this is our operand. Operand is the immediate value of 00. Operand का value अगर इसमें मान के चलो 03 है तो यहाँ पर मेरा जो value होगा 03 होगा है? कैसे यहाँ पर 00 कैसे आया बोलो lower order of 3000 and this is 30 कैसे आया higher order of 3000 this is a 3 byte instruction and this is 1 byte instruction and this is 2 byte instruction. So firstly is that this is the we clear the accumulator or initialize the value with 00 accumulator with 00. So this is the operand part of MBI instruction. This is the part of operand part of MBI instruction. Clear हुआ तुम्हारा query? Yes, sir. Thank you, sir. So another program is that अब हम बोल रहे हैं आप लोग लिखिएगा मेरा स्क्रीन शो कर रहा है ना अभी हेलो हेलो Yes, sir. So कर रहा. अभी क्या है स्क्रीन में मेरा बोलो तो प्रोग्राम है सर पिछला वाला. नाम क्या है उसका क्या क्या लिखा है वही तो पूछ रहे हैं अभी वाला प्रोग्राम जो सम कर रहे थे सीरीज का 8 बिट. So अभी next program is that largest find write a assembly language program to find the largest number from two 8-bit number मतलब दो 8-bit number में जो लार्जेस्ट नंबर है उसको निकालना है हमको यूजिंग प्रोग्राम. तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग दो डेटा ले लेंगे तो उसके बाद तो फाइंडिंग द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट व्हिच इंस्ट्रक्शन वी आर यूज्ड हियर हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने के लिए व कंपेयर करने के लिए कंपैरेटर. अंकिता कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज CMP. करते CMP हाँ कंपेयर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर और विद रजिस्टर और मेमोरी तो CMP इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. तो इसका पहला जो फ्लो चार्ट होगा क्या होगा इसमें दो डेटा लेना है अगर हम लोग क्या करना है कोई भी मेमोरी एड्रेस में सो यहाँ पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया जो आवर स्टार्टिंग मेमोरी स्टार्टिंग एड्रेस इज 8000 and our starting address is 8000 and the data are on the 3000 two data is one is 25 which is loaded in 3000x another is 15 which is loaded in 3001. okay so flow chart according to flow chart हम लोग क्या करेंगे लोड HL रजिस्टर पेयर विद द एड्रेस ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड ऑफ मेमोरी फर्स्ट ऑपरेंड मींस 25 ओके देन क्या करेंगे फर्स्ट जो ऑपरेंड लिए हैं हम उसको क्या करेंगे मेमोरी से कोई भी रजिस्टर में लेंगे तो सपोज एक एक्यूमुलेटर में लिए दूसरा हम लोग क्या किए बी रजिस्टर और सी रजिस्टर कोई भी रजिस्टर में ले सकते हैं. तो फर्स्ट फ्लो चार्ट में क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट देन लोड HL रजिस्टर पेयर with address of first operand memory location. So our first
operand's memory location is 3000 and our first memory location is 3000. Then move the first operand from memory to accumulator. Then again we are increment the HL register pair. We are increment the HL register pair to point the next memory लोकेशन. नेक्स्ट मेमोरी का क्यों की पॉइंट करेंगे? क्योंकि नेक्स्ट जो डेटा है जिसको लेके हमको ऑपरेशन करना है, नेक्स्ट डेटा वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा टू फेचिंग द नेक्स्ट डेटा. देन increment HL register pair to point the next memory location, and now move the second operand from memory to register B. Move the second operand memory to register B. Then we use a instruction compare B with A. Compare B with A. If there is a carry, अगर कैरी जनरेट करेगा तब क्या होता है? B का वैल्यू बड़ा होता है, A का वैल्यू छोटा होता है. इफ अगर कैरी जनरेट नहीं करते हैं तो A वैल्यू इज ग्रेटर देन B. मतलब रजिस्टर कंटेंट इज the content of accumulator is greater than content of register or memory. Here in this case the register B. So if there is a carry, then yes, so move the data from register B to accumulator, because register B will be the largest or smallest data, so it can be for storing purpose or further seeing purpose. We move the data from register P to accumulator. अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तब इंक्रीमेंट द HL register pair and move the result from accumulator to memory for further storing purpose, and stop the execution stop the execution. Okay, so इसमें इस प्रोग्राम में क्या क्या लिखेंगे हम लोग? तो इसमें हम क्या बोले हैं, हम इसको इसी को ये कर रहे हैं. जस्ट वन सेकेंड. एक है मेरा 25, दूसरा है 15. ओके ना, सॉरी. तो ये मेरा बिफोर एग्जीक्यूशन डेटा है, और दिस इज 2 and this is 25. Just one second. तो पहला जो की है मेरा starting address is 2000. okay, so first line is that, or this is our 2000 is the starting address, and now Alexa H 3000. So load the HL register pair with address of
3000। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या किए हम लोगों ने 2003 मूव m to a मूव m to a मूव m to a means the memory content or the data at 3000 hex memory location is the copied or moved to accumulator. Then we increment the INX register pair or INX H by 1, so it can be point the next memory location, means next memory location is 3001. So next data will be moved in memory. Then again we move the b comma m, b comma m. So b comma m, move the b comma m means move the memory content from, or the move the second operand from memory to register b, memory to register b. Then using cmp instruction we compare b with a. Then we using cmp instruction compare b with a. Then JNC, then JNC 2000, JNC 2000 B, B means this location, JNC 2000 B. So jump if no carry, अगर कैरी जनरेट नहीं करेगा तो A 2000 B जो मेमोरी लोकेशन है, एड्रेस जो है इस एड्रेस पे जंप करेगा, मतलब डायरेक्ट इस स्टेप में आ जाएगा. अगर कैरी जनरेट करेगा देन इट कैन बी गो टू द next step, means this step, means that move a comma b, means move the largest from register b to register a. means that अगर कैरी जनरेट करता तो रजिस्टर बी का जो कंटेंट होता वो ए का कंटेंट से बड़ा होता, means that the b content is greater than or largest from a content. And the INX H means increment H register pair to store the accumulator content in particular memory location, means that this memory location is the 3002. So move m comma a 77, move m comma a 77. So move the result from a to memory, move the result from a to memory, move the result from a to memory. ये तो गया लार्जेस्ट नंबर के लिए प्रोग्राम. अगर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए होगा तो हम लोग कोई भी सारे कुछ सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पर जगह JC हो जाएगा. इन दिस एक्सचेंज फॉर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 8-bit number, in this case reading only one change made in case of B is the JC, means jump if carry, jump अगर कैरी जनरेट करेगा तभी वो नंबर निकालने के लिए हम लोगों को जो सिंपल एक इंस्ट्रक्शन चेंज करना है, J it is replaced in NC as a JC is replaced or in JNC, मतलब JNC के जगह मेरा नंबर निकल जाएगा. इसमें किसी का कोई डाउट है? हेलो. तो आज हुआ मेरा n सीरीज ऑफ नंबर एडिशन
largest number of two 8-bit number, smallest number of two 8-bit number, क्योंकि करना है कि आपको समझ में आया? हेलो, मतलब सबको समझ में आ गया, लेकिन हम जब क्लास लेते हैं हम देखे हैं किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन तब भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, आज भी ऑनलाइन भी कोई नहीं। So another program is that write a assembly language program, largest number from array. इससे पहले जो लार्जेस्ट नंबर निकलने का जो प्रोग्राम था उसमें किसी एक उसमें हमको लार्जेस्ट कौन है वो निकलना है, लेकिन अगर उससे ज्यादा डेटा होगा और भाई एरे ऑफ डेटा होगा, इंस्ट्रक्शन सारे लगभग सेम रहेगा, स्मॉल चेंजेस इज रिक्वायरिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर। Again I share the screen. So in this array there are number of data is 5. In this array number of data is 5. So data is 15, 01, 63. From this 5 of data we can find the largest number. So number of 5, so count our counter is 0, 5. Okay, so initialize the
The same procedure is that LXI H. LXI H 3000. LXI H 3000 means load HL register pair with the address of 3000. Address of 3. Just 1 second. Address with 3000. Just part of this means initialize the load the value of a counter location, and then from move the count memory value from this move C comma M, move the counter or counter memory to register. Then INX use INX INX H, then INX H increment register HL register pair to point out the next memory. Now it point the next memory location means that this location, okay, 3001. Again move the first number from memory to register, move the first number from memory to register, then decrement C register, decrement the counter C register, then using DCRC decrement the counter or C value. So in previously the C value is 05, now the C value is 05. Then again we use INX increment the register pair to move or point out the next memory location. Then again move B comma M, move B comma from memory to register B. CMP B means compare B with A. Move, compare B with A. Then again move, again using this session JNC, jump to address 0E if there is there 0E means this location. अगर कोई कैरी करना है, अगर कैरी जनरेट करेगा then go to the next step means this step move A comma B means move the largest number from register B to register A. Then TRC C, then decrement register C, but now previously value is C is 0. Now the value is after the execution of DCRC instruction, the accumulated the C register value is or the counter value is 03. Then JNZ jump to address 2007, jump to address 2007 means back direction if counter is not 0. So यहाँ पर तो counter 0 नहीं हुआ है, so it back to the this location means 2007 location. Again this operation is repeat INX H, then again move B से M, मतलब M से B, then again compare, again checking the carry is generated or not. अगर carry generate करेगा तो ये नीचे स्टेप में आएगा, मतलब मूव A comma B में अगर carry generate नहीं करेगा तो it can be jump to the this location means 200E means this location. Okay, again checking the is there C value or counter value is 0. अगर 0 जब तक नहीं होगा इस लोकेशन में बैक जाएगा, जब 0 हो जाएगा then go back to this move comma A means that move the result from register A to M, register A to M. And last is the halt. So this is the
प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एन एरे। अगर 5 की जगह 10 होता तो 10 डेटा में सबसे जो बड़ा डेटा उसको आइडेंटिफाई कर सकते यूजिंग दिस प्रोग्राम। 10, 20, 100, 100, 1000 कोई भी होगा, ऑटोमेटिकली प्रोसेसर कैन बी चेक एंड फाइनली प्रोड्यूस द आउटपुट रिजल्ट। ओके, अगर सेम एज ए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एरे में एरे करना था हमको, तो इसमें सिर्फ जेएनसी के जगह जेसी होता, जेएनसी के जगह जेसी होता, ओनली जेसी। अब लेफ्ट अदर ऑन जेएनसी के जगह जेसी होगा। ठीक है, ओके, आज एंड करते हैं इस क्लास। आप लोगों को तो कोई क्वेरी नहीं है, आपको सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सबसे बड़ा बात है